नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का सेवल गुरु जी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो फर्स्टली हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू पीपल and those people who didn't subscribe to our channel, hit the subscribe button for daily such very important contents related to the GATE examination and also the other examinations. So as I have made a series complete playlist on the most expected topics subject wise. So this is, I think, the fifth maybe particular subject that we are covering, and it is one of the highest weightage topics. As you know, it's environmental engineering. तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी एक बार लाइक ठोक देना। ऐसे हर रोज इंपॉर्टेंट कंटेंट्स पाने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग विद द चैप्टर वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से मोस्टली यू कैन गेट 1 मार्क क्वेश्चन। एक्चुअली 1 मार्क क्वेश्चन आने की चांसेस है। सो लेट्स टॉक अबाउट द टोटल एक्सपेक्टेड वेटेज एज वी हैव स्पेक्युलेटेड इट्स गोइंग टू बी इन बिटवीन 9 and 10. So if it is 9, the mostly you can get basically 5 1 mark question and 2 marks questions actually ऐसे आने की chances ज़्यादा है, या फिर maximum 3 mark questions, 3 2 mark questions and 4 1 mark questions ऐसे भी आ सकता है. This is the speculations of mine actually. Now if you talk about the water characteristics chapter, as I have told you, 1 mark questions, mostly hardness related 1 mark question, या फिर like any other physical properties जो है, physical chemical जो properties है उस related 1 mark question, match the following type of questions इस type of आ सकता है. Now talking about the water treatment part, firstly comes sedimentation. Sedimentation से 2 mark question based on Stokes law, Newton's law or Hazen's law, whatever. Sedimentation जो है SOR related question, VS by SOR efficiency, ये related जो questions है you can get over there. Filtration से भी आने की chances है but थोड़ा कम है compared to sedimentation. BOD related question, you are definitely expected to get 2 mark question from BOD. You are likely to get actually over here. From ASP chapter, if I'm entering into the sewage part, actually sewage part में ASP related आपको एक 2 mark question मिल सकता है. Talking about solid waste management and air pollution, ये जो 2 chapter है जो हम normally neglect करते हैं, I am expecting at least 4 to 5 marks from these 2 chapters. I don't know, I might be wrong, बट ये मेरा स्पेकुलेशन है जो अभी तक ऑलमोस्ट करेक्ट ही रिजल्ट दे चुका है. इफ़ यू रिलेट टू माई पास्ट वीडियोज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एक्चुअली 2021 2022. सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई एम सेइंग एक्चुअली आई हैव मेड अ डिटेल एनालिसिस एज यू कैन सी एक्चुअली ओवर हियर, कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्या क्या आ सकता है इस बार. तो ASP एंड ऑल्सो air pollution related like different type of questions may be asked actually from air pollution, and solid waste management से भी आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो as well as 1 mark question. so definitely ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, ASP बहुत अच्छे से पढ़ना, and your sedimentation की जो स्टोक्स लॉ वाला चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से पढ़ना, SOR वाला कॉन्सेप्ट रादर, एंड BOD तो आप ऑलमोस्ट जानते हो, देयर इज नथिंग टू मेंशन अबाउट इट. एंड वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स की जो प्रॉपर्टीज है बस 1 मार्क क्वेश्चंस के हिसाब से, नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस है इंफॉर्मेटिव, उस पर ज़रूर IS 10500 रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो ज़रूर एक बार देख लेना. नाउ these are all about the expected topics. Now if you want the expected questions from this topic, क्या क्या expected questions हो सकता है which really nobody is offering you. Many people are offering you courses at very low prices, which is very commendable, no doubt, clap for them. But the point is that right now what you need is, since 4 months is left actually, you don't have enough time to cover the entire topics and stuff. It is just going to, it's they are actually, मैंने आपको रिकॉर्ड लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, ठूस दिया, भैया आपको भी तो लेना है. Now what is the need of the hour is actually the concept through the most expected question. मैंने तो expected topic बता दिया, expected question कहाँ से मिलेगा. You can join our courses, and currently up till Diwali the offer has been extended. It's going to be super duper affordable if you join the special combo courses, and you are going to get a flat 20% off on all the combo courses till Diwali. Everything you are going to get in my Telegram channel, and in the first comment and in the description of the video. registration form दिया हुआ है, HPCL, BHEL, GATE and SSC तीनों का कोर्स चल रहा है. जल्दी से जल्दी जाइए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए right now, and please do not waste your valuable time guys. And
ऑन द कॉम्बो कोर्सेज, वहाँ पे देखना गूगल फॉर्म में जब आप रजिस्टर करोगे उसके बगल में प्राइस लिखा हुआ है, एंड ऑन दैट प्राइस एक्चुअली 20% ऑफ विल बी देयर ऑन द कॉम्बो कोर्सेज, एंड एक्स्ट्रा if you're a female student, actually you are also going to get 10% discount. So everything together for you people up till Diwali. So enjoy with firecrackers and enjoy learning and enjoy with the most expected questions for GATE 2023. Last 4 months की most effective strategy which I have followed लेके आ रहा हूँ मैं very soon, maybe tonight or tomorrow. But for that, what you have to do is subscribe to this channel and join our Telegram channel, the link of which is in the description. Thank you guys. This is Aniruddha signing off. आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्दी in the next video. Take care. Thank you. Bye bye.